স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। তোমাদের জন্য আমরা আজকে আবার ডিকটেশনের ক্লাস নিয়ে এসেছি। ডিকটেশন ক্লাসটা খুব ভালো করে পড়ো, সামনে রেলওয়ে এক্সামস খুব তাড়াতাড়ি ডিক্লেয়ার করবে, তাও একটু সময় আছে তোমাদের কাছে। যতটা সময় আছে কোয়ালিফাইড ক্যান্ডিডেটসদের জন্য এনাফ। আশা করছি তোমরা ডিকটেশনগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করছো, ডিকটেশনগুলো খুব ভালো করে দেখতে থাকো, শুনতে থাকো, স্ট্রোক আউটলাইনগুলো খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করতে থাকো। কেমন হচ্ছে তোমাদের পারফরমেন্স আমাদেরকে জানাও, যে স্পিডটা কতটা ডেভেলপ হচ্ছে, আর এই নোটসগুলো, ওয়ার্ড আউটলাইন্সগুলো আর ডিকটেশনগুলো তোমাদের কতটা এফেক্ট করছে। আমাদেরকে লাইক করতে, সাবস্ক্রাইব করতে আর শেয়ার করতে ভুলো না। আমরা হচ্ছি ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি, ওয়েস্ট বেঙ্গলের 1 নম্বর স্টেনোগ্রাফি চ্যানেল। আশা করছি তোমাদের প্রত্যেকটা স্টেনোগ্রাফি এক্সাম কোয়ালিফাই হবে এবং স্কিল টেস্টেও তোমরা কোয়ালিফাই করে যাবে। থ্যাংক ইউ স্টুডেন্টস, অল দ্য বেস্ট। একটা 100 ওয়ার্ডসের ডিকটেশন হবে, একটা 110 ওয়ার্ডসের ডিকটেশন হবে। আশা করছি তোমরা ডিকটেশনগুলো খুব ভালো করে এনজয় করছো এবং ভালো। হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ইনফোকাস স্টেনোগ্রাফি। আজকে একটা 100 স্পিডের ডিকটেশন দেবো, সেটা রেল এসএসসি সব জায়গায় তোমাদের লাগবে কাজে। আর তোমার এই প্যাসেজের মধ্যে যে ওয়ার্ডগুলো আছে, যে জয়নিং, ক্যাচ অফ ওয়ার্ড, শর্টকাট, সব আজকে আমি বলে দিচ্ছি। ठीक है, फॉलो करो। हम आज एक तो 100 स्पीड पे डिक्टेशन देंगे, उसमें से जो जो वर्ड ज्वाइनिंग है, शॉर्टकट है, आज हम बता देते हैं यहाँ पर। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ऐसे फर्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स। एक्सटर्नल के डबल सर्कलेस एनएलुक एपालुक सर्कलेस। इरिगेशन मिनिस्ट्रीज है, इरिगेशन डाउन इरिगेशन डिवीजन एम सर्कलेस, मिनिस्ट्रीज है इसीलिए सर्कलेट दे दिया, डिवीजन एम सर्कलेस। फिनेंशियल एफ एनुक एन ऐसे पूरा करना पड़ेगा, शॉर्टकट करने से ऑफिशियल हो जाएगा। सुपरिंटेंडेंट्स सर्कलेस पियारुक एन डी हाफ एनु एन हाफ एस सर्कलेस पियर एन स्टोकन टी हाफ एनु एन हाफ सर्कलेस। डिपार्टमेंटल डी पर डिवीजन एम हाफ एनु, डिवीजन एम हाफ एनु डिपार्टमेंटल है इसीलिए। कॉम्पिटिटिव कॉमडॉट पी हाफ टी बी हुक। वैकेंसीज बी के एनुक स्टोकेस सर्कलेस, वैकेंसीज। अवेलेबल अबव द लाइन भी, अबव द लाइन भी करने से अवेलेबल हो जाएगा। डिफिनाइट डी एफ एन हाफ, आई डिप्टोंग देने से और बढ़िया होगा। डी एफ एन हाफ डिफिनाइट, डी एफ एन हाफ आ जाए। प्रोसीड्योर पियारुक सकले डी अपवर्ड है, अकॉर्डिंग टू द पियारुक हाफ, अकॉर्डिंग हो गया टिक द। हु हैव, हु गमलग, हु करके भी हुक, हु हैव क्वालिफाइड के लुक एफ हाफ क्वालिफाइड। अपॉइंटमेंट पी एन हुक एन हाफ एवर। सेक्रेटेरिएट सक्सेस क्या रूप टी अपवर्ड हाफ। असिस्टेंट्स टोके सक्सेस टी हाफ इन सक्सेस। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द गमलक बी बिग सक्सेस। ऑफ तो हम गायब कर दिया, क्या कि प्रीपोजिशन है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ होता है, ठीक है। डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस करके एम डिवीजन, डिफेंस मिनिस्ट्री। डिफेंस करके डी एफ स्टोकन सर्कलेस, डी एफ स्टोकन सर्कलेस डिफेंस, और डिस्टेंस करने से मिनिस्ट्री होगा।
economic, KNUK, seniority, suppose N, Ray T, Union Public Service Commission, N cutting, public service designations, N for Union Public PB Service Service Upwarder Circulars Commission Cation. ठीक है? From the very beginning, be omit, from the very very और गेनिंग कर दिया, बिगिनिंग हो गया. रियलिस्टिक अपर एल एस्लूप के, अनरिलेटेड एन अपर एल टी हाफ, फिटफुल एफ आप एफेलुक, फिटफुल एफ आप एफेलुक, यूनिफॉर्म वाई एन एन, यूनिफॉर्म. Participating, P upper half, circle P half dotting. Similar, below the line, circle M करने से similar हो जाएगा. Below the line, मतलब ये line है, below the name circle. Agencies, JN Stokes circles. Uniformity, YNN. Ministry of Home Affairs. Ministry, M for ministry, or home, Farooq circles. Ministry of Home Affairs. Assesses, Stokes, big circles, aval. Periodically, periodically अच्छे थर्ड प्लेस में बहाल हो जाएगा. ठीक है? पीरियडिकली, पीरियड करके के लोग, सफिशिएंटली, सफिशिएंट ही हो गया, सफिशिएंट डाउन लेवल. एंश्योरिंग, एन ऐसे डाउन डॉटिंग. इक्विटेबल, क्वाटी बी लोग, और एक तो क्वा हाफ करके पी एल की भी होगा. प्रॉस्परस, पी एल पी अपर सर्कलेस. एट एनी रेट, टी एन एल हाफ. स्विस, बिग सर्कलेस Stokes, big circles, Stokes. Suez. Deliberately, BRU half L. Inequality, in L T circles. Inequalities, water supply. Where TRU circles PLU. Listened, down L circles N half. Prosperous, PRU circle P upper circles. Scrutinize, circles PRU half N HTU. তো এই হলো আজকের শর্ট ফর্ম. এরপর ডিকটেশন দেবো, ডিকটেশনটা তোমরা ফলো করবে. আর প্রতিটি ওয়ার্ড খুব ভালো করে করবে, দেখবে, ভিডিও খুলে দেখবে ভালো করে. আর প্র্যাকটিস করো, ডিকটেশন খুব ভালো করে প্র্যাকটিস করো আগামী পরীক্ষাগুলোর জন্য. আস্তে আস্তে পরীক্ষা এগিয়ে আসছে. পুজোর সময় তো তোমাদের কটা দিন several questions raised regarding the Defense Ministry and the External Affairs and Irrigation Ministries have been clarified by my colleagues from those ministries. My task therefore has been simplified to that extent. Before I go to the questions, financial and economic, raised by several honorable members, I should like to clarify one or two points which are more administrative than economic or financial. One of them was raised by my honorable friend. He raised the question about the recruitment by the Assistant Superintendent's Departmental Competitive Examination and particularly about the examination held in 1960. He said that about ₹6 lakhs were spent for the 1960 examination and later it was declared that no vacancies were available.
He therefore suggested that a definite procedure should be there and the examination should be held according to the vacancies declared in advance, and all persons who have qualified in that examination should be eligible for promotion or for appointment. Sir, I do not know whether the honorable member knows how these vacancies are filled. He probably refers to the section officers grade in the Central Secretariat Service. This is filled 50% by direct recruitment and 25% by departmental competitive examination open to the assistant, that is the next lower grade, and the rest 25% by promotion of the assistant on the basis of seniority subject to fitness. The examination, therefore, that he was referring to was a departmental competitive examination for filling 25% of the vacancies. It takes about 1 year for the Union Public Service Commission to declare the results of the examination from the time they take up the question of the examination. It is not therefore possible to declare the number of vacancies to be filled in from the very beginning. To declare them just when the results are out is more realistic, and that is what is done. Sir, if the examination is treated as qualifying examination, the number of persons who will thus become eligible for appointment will be quite unrelated to the number of vacancies to be filled in, and then the very situation which the honorable member wishes to avoid would arise. It would not then be possible to hold any of the examinations at regular intervals, and promotions against this quota would become very fitful. The honorable member also suggested that the rules for recruitment and promotion, etc., should be uniform for all ministries, whether participating in the Central Secretariat Service scheme or not. It must be, and this is so, except for the Ministry of External Affairs and the Railways. These have different rules, but these rules are very much similar and there is not much difference. But because these persons are recruited for different purposes and by different agencies, they are separate. Therefore, his purpose in saying that there should be uniformity is almost carried out. The only difference is that the Ministry of Home Affairs does not control the services of these two ministries. Then, sir, questions were raised about backward areas and the backward states, and also about the city of Calcutta. If the budget is properly scrutinized, it would be found that assistance is provided for the states, particularly the backward states, and the Finance Commission, which assesses the overall requirements of the state, takes taken into consideration and makes its recommendations, which are carried out every time the Finance Commission's recommendations are received, and they are received periodically according to the Constitution. Sir, I would like to give the total amount paid to the state on this account. The main objective of planning is to create conditions in which living standards are raised in a
sufficiently reasonable level and all citizens are given full and equal opportunity for growth and services. The plan seeks to provide the balanced emphasis on increase the production of the employment. The development plans are thus accepted as the means for ensuring equitable development in the field of social services. There is no reason to suppose that the needs of the less fortunate and prosperous states are being neglected, but it would not be proper to expect that all these differences could be wiped out now immediately. It must be seen whether we are going towards that very end or not. We are deliberately going towards that end, and we hope and trust that in course of time these inequalities would be wiped out, if not completely wiped out. At any rate, they would be listened. My honorable friend complained about inadequate provision included in the plan for meeting the growing requirements of the city of Calcutta, where even the basic services like water supply, sewage, disposal, and drainage were not being augmented, and that the central government was not enthusiastic about solving these difficulties.